voice as well as the picture clarity too. Yes. I would like to listen from your side. Where were we standing for the topic? कहाँ पे हम लोग टॉपिक के लिए स्टैंड कर रहे थे? कहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था? Yes, please. Anyone? लास्ट लेक्चर में हमने क्या टॉपिक देखा है और कहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं? Yes, please. Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, yes. So in the last lecture, we started with crystal defects and we studied stoichiometric and impurity defects. Now we have to start with non-stoichiometric defects. Very good. Thank you. Thank you, Kashish. Okay. बाकी rest peoples, आप लोगों ने मोनम सर्वर साधन यही एक शायद पकड़ के रखा है, उसे भी ब्रेक करना पड़ेगा, है तरीके कई सारे, नो डाउट. ओके. आज के लेक्चर में हमें सॉलिड स्टेट चैप्टर को थोड़ा सा कंक्लूड ही करना है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड ज्यादा रखने की चांसेस है और मैं रिकैप पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा. सो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा उसके साथ कोप अप करेंगे और it will become easy for you then to get the topic well. Okay, so try to cope up with just a second, hold on. So accordingly I would like to conclude the chapter today and hope so you will cope up with the speed what today I mentioned. Okay, अपना जितना टाइम है उसी टाइम के अंदर मैं ये अपना जो चैप्टर है इस चैप्टर को मैं खत्म करने वाला, कवर करने वाला हूँ. ठीक है. अभी शायद जैसा अभी कशिश ने कहा था कि हमने लास्ट टाइम क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे. सो क्रिस्टल डिफेक्ट्स, crystal defects. Okay, hope you're getting the picture. क्रिस्टल डिफेक्ट की बात करते हैं. क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं. पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट्स. थोड़ा सा सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में देखते ताकि आपको थोड़ा सा इजी बने. लाइन डिफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन करना है नहीं हमें, बिकॉज वो हमारे बुक के अंदर है नहीं. ओके, देन यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स. स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स ये आता है. यहाँ पे बी आता है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. एंड तीसरा जो आता है यहाँ पे सी टाइप दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. या इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर हमने देखे, वापस इसके अंदर हमने पॉइंट्स देखे. पॉइंट नंबर दैट इज कंसेप्ट वैकेंसी डिफेक्ट, फिर उसके अंदर पहला. दूसरा हमने इसके अंदर देखा दैट इज कंसेप्ट सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. यहाँ पे सेल्फ ये पुट करना जरूरी है. You can say self interstitial defect. फिर देखा हमने स्कॉटकी डिफेक्ट और फोर्थ देखा हमने दैट इज यू कैन से फ्रैंकिल डिफेक्ट. और जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने ये सारे के सारे जो टॉपिक थे खास करके इसके अंदर के ये हमने डिस्कस किए थे. आई थिंक सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है कि हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया. ठीक है ना. जब हम इम्प्योरिटी की तरफ आते हैं तो इम्प्योरिटी के अंदर भी वापस हम लोग कुछ टॉपिक्स मिलते हैं और कुछ डिफेक्ट्स मिलते हैं. सब्स्टिट्यूशनल, ओके, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स, इलियोवैलेंट इम्प्योरिटी
defects, equivalent impurity defects, and तीसरा just interstitial impurity defects, ये आपको मिलता है। और इसके अंदर आपको दो मिलता है, mainly metal deficiency second metal excess defect, ये आपको मिलता है, ठीक है। सो इसी हिसाब से अभी हम लोग आगे जाते हैं, दैट इज कंसिडर व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके अंदर ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। होल्ड ऑन जस्ट सेकंड। ओके, ठीक है, डन। अभी देखिए ये हमारे मेटल डिफेक्ट्स है। When we talk about the metal defects are mainly classified into point defects and line defects. Already we have seen crystalline solids are the solids in which constituent particles are arranged in definite repeating order, and every crystalline solid has a space lattice where we have the lattice points and the bases which connect the lattice points. So the crystal lattice, which is also called as you can say space lattice, made up of bases and lattice. Every lattice represents the lattice points and that represent the particle, and particle may be atom, ion or molecule, and all these particles are orderly arranged in case of crystalline solids. Somewhere in the crystallization process, whenever this orderly arrangement of the particle is somewhere disturbed, particles are missing, vacant, या फिर they are delocalized, substituted, or they acquire some interstitial space, they may be vacant. Depend upon that, we can call it as a imperfection, or called as a crystal defect. So when defect is created at a lattice point, that is called as a point defect. And when the defect is created at the basis point, that's called as a line defect, because the basis is nothing but the line which connects the two nearest particles or many particles in order. So that has to be in a almost a linear manner, एक line में होता है. And whenever these particles are somewhere dislocated, that is called a line defect. But line defect के बारे में आपके बुक के अंदर ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो इसलिए हम भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे. जेई नीट के अंदर अगर आएगा तो वहां पे हम लोग बात जरूर करेंगे बात. But point defect ही उसके अंदर का मेजर डिफेक्ट, और point defect के अंदर हम देखते हैं कि it can be classified into stoichiometric and non-stoichiometric as well as impurity defects. Stoichiometric defects, इसके अंदर हमने ये देखा कि stoichiometry is the ratio of the particles remain the same. Suppose substance is made of A and B, the ratio of A and B remains the same. या फिर that is a molecular ionic solid where there is a cation, there is an anion, and when this ratio is remains same, that's called as stoichiometry. Or when the particle ratio is disturbed, that is called as you can say non-stoichiometric. Impurity defect, sometimes it can be taken as a non-stoichiometric, or some of the impurity defects are of the stoichiometric nature. So impurity defects के अंदर दोनों टाइप के आते हैं. Some of the impurity defects are of you can say stoichiometric, and some of the impurity defects are of non-stoichiometric type. उसके अंदर वो आ जाता है. अभी already हमने ये देखा है. What is vacancy? Here vacancy is actually created at the particle or lattice point. Self interstitial defect मतलब that particle dislocates from its main position, acquires some interstitial position हमने देखा है. Schottky defect हमने देखा है, that is generally produced into the ionic solids, that is cations and anions because of that. And Frankel defect is also we have discussed in last lecture how these vacancies are created here in the Frankel. That is also what we have seen. Now today even we have already discussed about these impurity defects. Impurity defects के अंदर substitutional defect. Substitution, one of the particle of the crystalline solid is substituted by another particle, that is called as an impurity. जैसे कि मैंने बताया कि हमारा अगर सब्सटेंस ए बी सब्सटेंस बना हुआ है, उसके अंदर ए के और बी के पार्टिकल्स है, और दोनों पार्टिकल सेम रेशियो में हो सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर ए बी के सिवा सी सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल उसके अंदर आ जाते हैं, either A is substituted by C or either B is substituted by C, or some atoms of A or B are substituted by C particle, then that is called as an impurity. And when the particle size is almost similar, the C particle which is entering into this crystal lattice having similar size, either like A or either like B, then that is a complete substitution, because one of the particle of A is substituted by C. That is called as a substitution. अब इसके अंदर देखिए कि जितने सारे मेटल एलॉयज है, सारे मेटल एलॉयज सब्स्टिट्यूशनरी इसके अंदर आ ही जाते हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज brass is a metal which is of the combination of, you can say, copper and zinc. Brass is the metal which is an alloy actually,
and that is made up of, you can zinc and copper. So whenever some particles of the copper are replaced by zinc, the size is almost comparable same. मतलब similar size होना जरूरी नहीं, comparatively similar होना चाहिए, comparison में similar होना चाहिए. And then the substitution. So copper particles are substituted by zinc, and then that is called as, you can say, substitution defect. Yes. Tanvi Selar, please mute your sound. Tanvi Selar. Tanvi Selar, yeah, thank you. Try to maintain. Okay, so thank you. Now, when we talk about this, you can say allovalent substitution. What happens here? This allovalent substitution is due to the self substance having higher oxidation state. कभी-कभी देखिए ना कि strontium like substance, nickel like substance are having two oxidation state, +2, +3, +4. These like oxidation state. So when we talk about this allovalent substitution, at the time what happens? There is a one substance, there is a one metal having a lower oxidation state, and there is another substance having higher oxidation state. For example, sodium chloride substance की हम बात करते हैं. We are talking about allovalent substitution. Sodium chloride की हम बात करते हैं. यहाँ पे देखिए कि this is the crystal lattice of sodium chloride. Crystal lattice of sodium chloride. जिसके अंदर आपको यहाँ पे sodium plus, chlorine minus, sodium plus, chlorine minus, Cl minus, sodium plus, chlorine minus, sodium plus, chlorine minus, sodium plus. ऐसा है. तो ये जो crystal lattice है, this crystal lattice is also sodium. शायद आपको size थोड़ा छोटा दिखाई देता होगा. Try to get it. This is the crystal lattice of sodium chloride. Every sodium is surrounded by chlorine. Every chlorine is surrounded by sodium. ये देखिए, surrounded. इस सोडियम क्लोराइड के अंदर क्रिस्टलाइज होते समय अगर हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड ऐड करेंगे, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, तो सोडियम इज हैविंग वैलेंसी +1, सोडियम हैज वैलेंसी +1, दैट स्ट्रोंटियम हैज वैलेंसी +2, स्ट्रोंटियम का वैलेंसी +2 है. तो होता क्या है कि स्ट्रोंटियम का एक एटम दो क्लोरीन के एटम को पकड़ के रख सकता है, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज़ इट नीड्स टू. अगर मानो दिस सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंटियम, this sodium is replaced by strontium having valency 2, तो यहाँ का सोडियम शायद गायब होता है. This sodium is completely absent vacant. So impurity तो आ गया, strontium is impurity, but at the same time this impurity is having higher oxidation state than the sodium, and that's why one of the sodium atom has to come out of this crystal lattice and their vacancy is created. So that's why this is called a defect, and this is nothing but the impurity defect. So this is the defect created by another impurity having higher oxidation state, and that is called, you can say, allovalent impurity defect. When it comes to interstitial defects में क्या होता है scenario? Suppose this is the crystal lattice of iron. तो ये सारे iron के ions हैं, okay? ये सारे ions के ions, iron. ये सारे ion के ion, मतलब this is the crystal lattice of iron metal. तो उसके अंदर absolutely सारे जो particles हैं वो सारे ions के रहे. होता क्या है? Some of the particles of carbon-like substances, some particles get introduced here in this one. Comparatively, when compared with the particle of iron, carbon is having a very small particle size. So this small particle size acquires the interstitial position. So इसके अंदर दो चीजें हैं. एक तो कार्बन की impurity present है iron के अंदर, और particle size भी छोटा है, and that's why it acquires the interstitial space, जो already छोटा होता है. Interstitial space already छोटा होता है, और वो पार्टिकल वहां पे जाके फिट होते हैं, सेट होते हैं, वहां पे फंस जाता है, और उसी के कारण क्रिस्टल डिफेक्ट की होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल impurity defects. So this is what we can say. These are the types of impurity defects. So hope everyone got it. Impurity defects are defects. मतलब here the defect is created because of some another particle, third particle. Impurity entered into this crystal lattice. Here impurity completely substitute one of the particles. As like copper is substituted by zinc in a brass metal. Allovalence, here also impurity introduced into this crystal lattice having higher oxidation state. Sodium chloride के केस में strontium chloride enter करता है, और वो सोडियम को वहां से डिसलोकेट करता है, यहाँ से हटा देता है. So ये allovalent है. मतलब दोनों में फर्क क्या है कि ये जो impurity आ रही है, this with higher oxidation state, and that's why it's called as allovalent, related with the valency, higher valence. Interstitial, another particle is introduced,
but that particle is having a smaller carbon particle size, a smaller particle size compared with some other particles of the crystal lattice, and they acquire the interstitial space. So space is interstitial, particle size is also very small, and that's why that is called the interstitial impurity defect. So these are the second kind of impurity defects. Now let's move to third kind of impurity defect, that is you can say non-stoichiometric defect, जिसके अंदर मेनली दो आते हैं, metal deficiency and metal excess defect. अभी when we talk about the metal deficiency defect, क्या है ये metal deficiency defect? आप देखिएगा, what is this metal deficiency defect? So when we talk about the metal deficiency defect, ये इसी की तरह है, हमने यहाँ पर जो देखा था ऑलमोस्ट इसी काइंड की तरह वो डिफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट होती है। मतलब ये जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर सेम सब्सटेंस आ जाता है, इंप्योरिटी नहीं आती। इसके अंदर क्या देखा हमने, जो एल्यूरेंट के अंदर देखा था, एल्यूरेंट के अंदर देखा था दिस इज यू कैन से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल था, और इसके अंदर स्ट्रोंटियम एंटर करता है। बट हम जब इसकी बात करते हैं, दैट इज यू कैन से मेटल डिफिशिएंसी की बात करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा अलग केस मिलता है हमको, वो क्या देखते हैं, ओके थोड़ा सा अलग केस ऐसा है इसके अंदर कि सपोज ये क्रिस्टल लैटिस एंड दैट इज ऑफ यू कैन से निकल सब्सटेंस का एक क्रिस्टल लैटिस है, निकल विद क्लोरीन या समथिंग सॉल्ट। तो होता क्या है कि निकल इज द सब्सटेंस हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या फिर +3 लाइक दैट। सो सिंगल सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3। So suppose this crystal lattice is made up of only nickel +2. All are nickel +2. So this is you can say all are nickel +2 here. So nickel है, okay. Yeah, whatever nickel chloride वगैरह हो सकता है. So this is the nickel having +2 oxidation state, and suppose this is the nickel having +3 oxidation state. So what happens exactly here? Because of this +3 oxidation state, सबका +2 है, इसका +3 है. So one of the nickel has to come out of this one. One of the nickel has to come out of this one because one of the nickel having higher oxidation state has acquired this plus. So जैसे कि generally oxides में होता है, so suppose कि हमें nickel oxide की बात करें, so this is the nickel oxygen आता है यहाँ। तो इस केस में होता क्या है कि निकल का common oxidation state +2 है, but somewhere some of the particles of nickel are introduced having higher oxidation state, तो ये निकल आ जाता है higher oxidation state। तो इसमें है तो सेम ही एटम, कोई impurity नहीं है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज्यादा है, और उसके कारण होता क्या है कि वन ऑफ द स्पेस विल रिमेन वैकेंट, वन ऑफ द प्लेस फॉर द निकल 2+ रिमेन्स वैकेंट ओवर हियर, एंड दैट हैज टू हैव द वैकेंट प्लेस, एंड दिस इज कॉल्ड यू कैन से मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इसे हम लोग मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ऐसा कहते हैं क्योंकि एक्चुअली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, इसके अंदर निकल एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 अगर होना चाहिए था, है नहीं, यहाँ पे सिर्फ निकल का एटम यहाँ से गायब है, मिसिंग आउट है, वैकेंट है, बल्कि ऑक्सीजन के सारे एटम अपनी जगह उसके अंदर मिलते हैं, एंड देन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट यू कैन कॉल इट एज यू कैन से metal deficiency defect. Hope everyone got it. What is metal deficiency defect? So this is created because of higher oxidation state of the same substance का higher oxidation state आपको उसके अंदर मिलता है, और जिसके कारण ये आपको क्रिएट होता है metal deficiency defect. Now next is you can say metal excess defect. मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक खास है, मैं उसके अंदर इसमें आप कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे, जरूर ये जरा ये ओके। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसके अंदर वापस आपको अलग अलग 3 केस मिलते हैं, मतलब मेनली 2 तो मिलते हैं उसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर। हियर excess defects, okay। अभी देखिए जिंक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि जिंक ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस है, लाइक दिस इज द जिंक ऑक्साइड। तो उसमें ये सारे जिंक ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन जिंक लाइक दिस ऐसा। सो दिस इज यू कैन से जिंक, ये ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन जिंक लाइक दिस केस यहाँ पे आपको मिलता है। ये एक ऑर्डरली पार्टिकल है जिसे हम लोग जिंक ऑक्साइड ऐसे कहते हैं। इसमें 2 केसेस मिलते हैं। सम टाइम न्यूट्रल एटम्स ऑफ जिंक आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। मेटल सेम है, सब्सटेंस सेम है, बट न्यूट्रल एटम्स है। जिंक ऑक्साइड के केस में जिंक का कुछ अपना एक बैलेंस होगा और ऑक्सीजन का अपना एक बैलेंस होगा, दैट इज बैलेंस्ड। हियर
मेटल एक्सेस कह रहे हैं हम, तो जिंक ऑक्साइड है, रेशो 1:1 है. Some of the metal atoms are trapped in excess होते हैं, and that's why it is non-stoichiometric, because stoichiometry के अंदर 1:1 रेशो होना जरूरी है. जो जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं तो 1:1 रेशो है, but here some of the neutral atoms of zinc are trapped in interstitial positions, and that's why here suppose this is the zinc which is neutral, this is not an ion. ये पहला केस है, this is you can say first case, पहला केस है, neutral atoms are trapped in this. This type of defect is created, that is we can say what is it, metal defect first case where a neutral atom is trapped. Second case में क्या होता है देखिएगा, second case में क्या होता है कि ये जो जिंक ऑक्साइड, दिस जिंक ऑक्साइड अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है जिंक प्लस 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 ऑक्सीजन 1/2 O2, ऑक्सीजन निकल जाता है और इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स इट लूजेस हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है. तो होता क्या है, व्हेन इट लूजेस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे और Zn प्लस कहाँ पे जाएगा, दैट मैटर्स अ लॉट. इस केस में न्यूट्रल जिंक यहाँ पे अटका हुआ. सेकंड केस में होता क्या है कि यहाँ पे ये जिंक है, ऑक्सीजन है, जिंक है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, जिंक, ऑक्सीजन, जिंक है, लाइक दिस वन. होता क्या है कि यहाँ पे Zn प्लस प्लस, ये जो Zn प्लस प्लस है, because of the decomposition of zinc oxide, Zn plus plus trapped into interstitial spaces. And the electrons left, these are the 2 electrons which are left. These electrons are also here, somewhere lies here in this crystal lattice. So, ये जो crystal lattice है, इस crystal lattice के अंदर आपको ये zinc plus ions भी मिलते हैं और आपको electrons भी इस crystal lattice के अंदर trapped मिलते हैं. This is second kind of you can say metal excess defect is obtained. यहाँ पर भी metal excess है, यहाँ पर भी metal excess है. But case first में होता क्या है कि neutral atom of metal is trapped. And इस केस में क्या होता है कि metal ion with electrons are trapped in this one, and this type of defect is called, you can say, metal excess defect. तो उसे हम लोग metal excess defect ऐसा कहते हैं. That is what we get over here. ठीक है. Now next is इसी के अंदर का metal excess के अंदर का if center करके, that is anion vacancies कहा जाता है. तो ये तीसरा इसके अंदर का टाइप है, आपको मिलता है, that is F centers और anion vacancies, anion vacancies ऐसा कहा जाता है. Okay. anion vacancies or also called F centers ऐसे उसे कहा जाता है. So what is this F centers और ये anion vacancies होते क्या है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. Sometime it happened that suppose सोडियम क्लोराइड का केस लेते हैं जिसके अंदर सोडियम और क्लोरीन है, जिसका दोनों का वैलेंसी 1:1 है, मतलब सोडियम has +1 and chlorine has -1. Sometime when the sodium is heated, sodium chloride is heated in presence of sodium or vapors of sodium. तो सोडियम के क्रिस्टल्स के ऊपर यहाँ पे लेता हूँ इसे, इस डायग्राम को. So this is, you can say, ये सारा ये सब सोडियम क्लोराइड्स है. This is sodium chlorine, sodium chlorine, sodium chlorine, sodium chlorine and sodium ऐसा है. So this is the crystallities of sodium chloride. इसे हम जब सोडियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सोडियम इसके ऊपर डिपॉजिट होता है. सोडियम के कुछ एटम इस क्रिस्टल्स के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. सोडियम के कुछ एटम्स इस क्रिस्टल्स के ऊपर डिपॉजिट होते हैं और डिपॉजिट जब होते हैं तो क्लोरीन डिफ्यूज आउट ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस. क्लोरीन डिफ्यूज आउट ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस. अब देखिए इस क्रिस्टल लैटिस में क्लोरीन डिफ्यूज होता है. जिस तरीके से हमारे घर के अंदर हम देखते हैं बलून, बलून में से एयर डिफ्यूज होकर बाहर आता है ना. बचपन में कभी आपने देखा होगा कि हम किसी फेयर में वगैरह जाते हैं, वहां से बलून लेके आते थे, घर के अंदर रख देते, दूसरे तीसरे दिन बलून का हवा कम हो जाता है. उसके पीछे रीजन है कि बलून के अंदर से एयर डिफ्यूज होकर बाहर आता है. ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है. इसके अंदर सोडियम क्लोरीन और इसके सरफेस के ऊपर मानो सोडियम का एक एटम यहाँ पे, अगर सोडियम का एक एटम यहाँ पे आ जाता है सरफेस के ऊपर, आई एम टॉकिंग सरफेस के ऊपर सोडियम का एटम, तो ये जो क्लोरीन है दिस कम आउट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है, एंड रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म NaCl, और इस क्रिस्टल के ऊपर आ जाता है, क्रिस्टल के ऊपर ही चिपक जाता है. There is a lot of attraction for the chlorine, for the sodium. So that's why chlorine diffuse out of the crystal lattice and react with sodium. Chlorine जब यहाँ से निकल के आएगा, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके नहीं चलता है होगा, तो यहाँ पे शायद Cl फिट हो जाएगा, Cl ये बॉन्ड होके, बट यहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो गया और सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो वैकेंट प्लेस है, डिलोकलाइज या क्रिएटेड स्पेस है बिकॉज ऑफ क्लोरीन डिफ्यूज्ड आउट, ये यहाँ पे क्रिएट होता है. And this is anion vacancies, मतलब there is a vacant place which is occupied by the electron,
and this is called as F center. And because of this F center, whenever these metals are burned, they burn with a colored flame. तो हम जो कई सारे मेटल जब बर्न होते हैं तो वो कलर्ड फ्लेम दिखाते हैं, वो इसी कारण से दिखाते हैं. That is called as F centers. तो F centers का मीनिंग ये है कि some vacant spaces are filled by the electrons because of some particles may diffuse out of the crystal lattice, and these F centers are created. And this is one of the important impurity you can say here, that is called as F center impurity, which is a kind of metal excess defect. Okay. So इसके अंदर मेटल एक्सेस मतलब ये मेटल एक्सेस आया, and that's why it is called as metal excess defect. वो सरफेस के ऊपर यहाँ पे आ जाता है, that's called as metal excess defect. So hope everyone got it. What are the crystal defects? Once again, crystal defects are mainly you can say point defect and line defect. Point defect के अंदर आता है stoichiometric defect, impurity defects and non-stoichiometric defect. Stoichiometric के अंदर देखिए हमने vacancy, self-interstitial defect, Schottky defect, Frankel defect. Impurity के अंदर substitutional, eluvalent and interstitial, and non-stoichiometric के अंदर देखिए metal deficiency and metal excess defects. So we have seen all of them. Metal excess के अंदर भी देखे हमने, that is you can see here. ये दो टाइप देखे, zinc और eluvalent का देखा हमने. Zinc का देखा. First case, second case, neutral metal atom, metal ion is trapped into this. ये और यहाँ पे F centers देखे, जो F center की खासियत है, जो this shows the colored flame whenever they are burnt. Clear with this? So that is what we can say regarding this one. Now let's move to next. That is called concept of electrical conductivities. That is conductors, insulators, and semiconductors. So, okay. So concept of conductors. Concept of conductors. You can say non-conductors, or you can say here you can as conductors, insulators, and semiconductors. That is the electrical property of the materials, or you can say crystalline solids. That is what we discussed here. So इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें मिलते हैं कंडक्टर्स, ये नंबर 1 है. दूसरे मिलते हैं हम लोगों को इंसुलेटर्स, एंड तीसरे मिलते हैं हम लोगों को दैट यू कैन से सेमीकंडक्टर्स. एंड दिस इज नथिंग बट यू कैन से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. Electrical properties of the crystalline solids, you can say. So होप शायद लास्ट का ये ऊपर का दिखाई दे रहा है आपको, शायद नहीं. ठीक है, these are electrical properties. मतलब ये जो तीन डिस्कस कर रहे हैं ना, these are electrical properties. Electrical properties of crystalline solids. So what are the crystalline solids we discussed? These crystalline solids are classified again into 3 categories. That is, you can say conductors, insulators, and semiconductors. Conductors कौन होते हैं? जिनके बीच में कंडक्टिविटी 10⁴ to 10⁷ ओहम पर मीटर इतनी होती है. So the crystalline solids which has the electrical conductivity in between 10⁴ to 10⁷ per meter की कंडक्टिविटी होती है, these are called as conductors. Insulators की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी 10⁻10 to 10⁻20 per meter होती है. और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो 10⁻6 to 10⁴ per meter कंडक्टिविटी होती है. So this is the statistical data हम लोग बोल सकते हैं. So conductors, insulators, and semiconductors. I would like to tell you the examples of this one. Generally, metals are conductors. Metals are good conductors of heat and electricity. The reason behind that, metals, whenever electric charge is applied to the metals, they show the conductors between 10⁴ to 10⁷ per meter. इतना conductivity दिखाता है. So generally, all metals are conductors. There are some few exceptions for that. Insulators की बात करते हैं. Rubber, plastic, wood. These are insulator because they do not conduct electricity. Do not conduct the electricity in our normal language.
scientific language, their conductivity is in between 10 raised to minus to 10 raised to minus 20 per ohm per meter if the conductivity is equal to no as of that. And semiconductors are the substances, for understanding level, they are non-conductor at low temperature but becomes conductor at high temperature. These are the substances which are conductor at high temperature, but they are non-conductor at a low temperature. And that's why they are called semiconductor. मतलब कभी कंडक्टिविटी दिखाते हैं, कभी कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं. आप अच्छी तरह जानते हो सेमीकंडक्टर्स. हमारे मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेमीकंडक्टर्स का है. नॉट वेरी वेल, बट दैट डजंट मीन कि उनकी मर्जी के हिसाब से कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते. इट्स नॉट लाइक दैट. It is that at the low temperature they do not show the conductors, but at high temperature they show the conductors. And their conductance is in between 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 per ohm per meter. इतना conductance semiconductors का होता है. So metals are generally conductors. Rubber, plastic-like substances are non-conductors or insulators, and there are some alloys of the material which are acting as a semiconductors, जो as a processor वगैरह laptop के अंदर, mobile के अंदर use करता है. Thing is that the conduction is conduction of the material, non-conduction of the insulators or semiconductors can be explained on the basis of band theory. It can be explained on the basis of the band theory. Band theory. This is very important. Why metal shows the conductance? Why rubber is an insulator, and why some of the substances are acting as a semiconductors? So there is a concept called as band theory. So according to molecular orbital theory, MO, molecular orbital theory, you have discussed in chemical bonding 11th time. Band theory के हिसाब से molecular orbital theory, where atoms come closer, atom comes closer to form a band. The outermost shell form a band. Suppose अभी देखिए कि this is the first atom, the second atom, third atom, fourth atom. ऐसे बहुत सारे atoms हैं जिनके nucleus है यहाँ. Nucleus है. अभी ये atom है, इसके cell से like this. ये atom है, इसके cell से like this. ओके देखिए ये सारे atoms हैं, उनका cells, cells subcells. ये कई सारे atoms अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, और ये जो अप्रोच करते हैं तो उनके बाहर का जो सेल है वो इकट्ठा के उनसे एक बैंड बनता है. And this band is nothing but, you can say, that band may be a conduction band, that may be non-conduction band, but they form the band. Outer orbitals or outer shells form a band, and this is for that may be called as a conduction band, that may be non-conduction band. Generally, the outermost band is a conduction band, and inner bands are a non-conduction band. ऐसा classification होता है. But atomic orbitals comes together to form a molecular orbital, and the molecular orbital which is throughout the molecule, that is acting as a band. That is acting as a band, and that is classified into conduction and non-conduction bands. अभी होता क्या है कि इसके अंदर तीन कैटेगरीज आते हैं. You can say number one is a conduction band. एक conduction band आता है. दूसरा जो होता है that is, you can say, non-conduction band. या फिर उसे वैलेंस बैंड भी कहते हैं आपकी किस लैंग्वेज में, वैलेंस बैंड. एंड तीसरा जो होता है you can say बैंड गैप. बैंड गैप होता क्या है, see, this is the conduction band, this is, you can say, non-conduction or valence, this is conduction band, this is, you can say, valence band, and this is the gap. This is also called as forbidden gap. This is also called as forbidden gap. अब ये यहाँ पे तैयार होता है, यहाँ पे तैयार होता है. मैं अगर ये सारे एटम, दो एटम को मैं ड्रॉ करना चाहूंगा. सी, ये पहला एटम है, इसका ये इस तरीके से ऑर्बिटल है. ये दूसरा एटम है जिसका ऑर्बिटल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस. अब ये जब ड्रॉ करता हूँ तो ये जो है, ये एक बैंड तैयार होता है जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का ये बैंड. तो ये मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द बैंड व्हिच इज कंडक्शन बैंड. एंड ये जो अंदर का बैंड बनता है, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, जहाँ पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड. सो इफ electrons are readily available in this conduction band, that circumference shows the conduction, and electrons are not available here, they are available in this valence band. Valence bond electrons are tightly or closely packed with the nucleus, and they are not easily available for the conduction. Metals are good conductors because metal के केस में होता क्या है, metal के केस में जो outermost orbitals है, outermost orbital में electrons already होते हैं because they have the excess electrons, and that's why they show the conduction and conduction band. But the electrons are readily available in the conduction band, that's why this shows the conduction. But in case of insulator and semiconductors, electrons are not available in the conduction band, they are in valence or valence band and below. So होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये दोनों में है, और दोनों के बीच में गैप कितना है जो यहाँ पे मिल रहा है. This is the conduction band which is formed by the outermost orbitals, and these are formed by innermost or valence orbitals and innermost. So how much is the gap between this? It's called as a forbidden gap, also called as an energy gap.
If electrons are readily available in conduction band, it shows the conduction. If electrons are available in valence band, valence band, not here in conduction band, then it may or may not show conduction. The reason behind that, if this gap is small gap, then electron can jump from valence band to conduction band. That happens in semiconductors. Semiconductors, when they are heated, or whenever ultraviolet radiations and some kind of radiations are fall on them, energy is absorbed by the electron. Electron jumps from valence band to conduction band, and then it can show conductance. So semiconductors at low temperature do not show the conduction, but at higher temperature they show the conduction because electron can jump from the higher band. And this is the energy gap which make a big difference. Either that substance should be semiconductor or insulator. In case of insulator, this energy gap is too much large, and that's why electron can't jump from valence band to conduction band. मतलब जैसे आपको अगर बोला जाए कि आपको लॉन्ग जंप लगाना और 20 फीट का लॉन्ग जंप लगाना, तो ये कंट्रोल के बाहर है 20 फीट का. आप है ना, हमें से कोई बच्चा हो सकता है जो तो लॉन्ग जंप स्पोर्ट किया तो 10-12 फीट का लॉन्ग जंप लगा सकता है, बट 20 फीट का लॉन्ग जंप लगाने के लिए बोलेंगे तो सिंपली डिफिकल्ट है. हाँ, हमें से सबको बोला जाएगा आपको 4 फीट का लगाना है तो ऑलमोस्ट सब लोग हमें से 4 फीट का लॉन्ग जंप लगा सकते हैं. तो ये एनर्जी गैप मैटर करता है. तो ये गैप जितना ज्यादा है उतना हम इंसुलेटर की तरफ जाते हैं, और जितना कम है उतना हम सेमीकंडक्टर, और अगर ये गैप है ही नहीं तो हम लोग कंडक्टर की तरफ जाते हैं. खास करके मेटल के केस में दीज आर ओवरलैप, इसे एस और पी भी कहा जाता है. सो सपोज दिस इज पी और दिस यू कैन से एस. सो ये जो है यहाँ पे दिखता है कि दिस इज पी बैंड एंड दिस इज एस बैंड, और ये है ओवरलैपिंग रीजन. ऑलरेडी तो मेटल के केस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर इन दिस कंडक्शन बैंड, एंड दैट्स व्हाई इट शोस द कंडक्टेंस. तो ये गैप है दोनों के बीच में है ही नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के अंदर थोड़े से ओवरलैप्ड है. एंड दिस केस इज इन केस ऑफ मेटल्स. नॉन मेटल के केस में ऐसा है नहीं है, खास करके इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप थोड़ा होता है और इंसुलेटर में गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है. So that's how we can have this concept of conductors, insulators, and semiconductors. We need bit more explanation on this conductor semiconductor thing. As well, we have to discuss the magnetism. So I have tried my level best, but till your time is over and I couldn't cover the topic. Just topic of 10 to 15 minutes remaining, but we'll cover it tomorrow with the recap. Thank you very much. See you tomorrow. Bye.